So guys, the day has come जब मैं दिखाने वाली तुम्हें हमारा घर कैसा दिखता है, कैसा है. But a little twist here, मैं दिखाने वाली शो होम जो exactly same है, but हमारा वाला घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके क्लिप्स भी मैं डालूंगी एंड में इसी वीडियो के, तो तुम देख सकते हो कि घर की स्टेज क्या है. बट मैं अभी तुम्हें घर दिखाने वाली हूँ एग्जैक्ट सेम जो हमारा है. ये वाला घर स्ट्रीट फेसिंग है, हमारा वाला घर गार्डन फेसिंग है, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. वो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी, जब वो फुल्ली रेडी हो जाएगा एक एम्प्टी हाउस टूर डेफिनेटली आएगा. बट अभी मैं दिखाती हूँ हमारा घर दिखता कैसे है. लेट्स गो, चलो भैया घर दिखाया जाए तुम्हें. सो गाइज, दिस इज द शो होम जो हम दिखाने वाले हैं और इसका व्यू स्ट्रीट व्यू है. Alright, let me show you the house now, okay? Also मैं थोड़े चेंजेस पूछती जाऊंगी कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना क्या करना चाहिए बेस्ट का. This is how you enter. This is the first floor, technically ground floor, and we have like an open studio concept. So here what I'm thinking is first to change the light. Second what I'm thinking is giving a very vintage kind of a theme. तो ये हमारा एक open concept area है जो हम seating area भी बनाएंगे. और अगर आगे जाएंगे we'll move on to the next floor, but before we move towards this side let me show you what we have here. So the first door that you can see here is the garage. Let's open and see. So guys, this is a double door garage. So after this door there are two doors here, which is like a mechanical, technical, what kind of mechanical room. Mechanical room. So again, boring. So after here there is this door which is a closet. तो ये यहाँ पे हमारे पास एक closet है, good amount of space. Also मैंने क्या सोचा है, मेरे जो bags and shoes की एक proper अलग-अलग cabinet type, cupboard type आएगा जो garage में, वो मैं धीरे-धीरे explain करूँगी कैसे मैंने plan किया है. Do you want to see the closet from inside a little bit? And then after this closet we have a window here. इन लोगों ने यहाँ पे सीटिंग एरिया बनाया, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक वाज रखने का, या फिर मैं भी कुछ ऐसा रख सकती हूँ. डिपेंड्स व्हाट आई फाइंड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, दिस वाज द मेन डोर जहाँ से हमने एंटर किया था. नाउ वील मूव ऑन टू दिस साइड. ऑल्सो वी हैव बिग ह्यूमंगस विंडो हियर. ग्रेट, यहाँ पे सनलाइट बहुत अमेजिंगली आती है डिपेंडिंग व्हाट फेसिंग यू हैव, बट एनीवेज वी हैव बिगर लार्ज विंडोज वी हैव हियर. लेट्स गो अप. और जितनी भी लाइट्स फिक्सचर्स देख रहे हो वो हमको मिलेंगे जो लगे हुए हैं. कुछ अलग होगा जो नहीं मिलेगा मैं बता दूंगी. तो यहाँ पर दिस इज द मिडिल फ्लोर एंड इसमें क्या क्या है आई विल शो यू. कम. सो वी विल बिगिन विद द लेफ्ट साइड फर्स्ट. फर्स्ट डोर दैट वी हैव इज द वॉशरूम, हाफ वॉशरूम टेक्निकली, पाउडर रूम. आई विल शो यू. So this is a tiny cute washroom, powder room. Again, I have lot of concept for here also, and also I need some storage space because यहाँ पे storage space नहीं है उतनी. So I might have something installed under this or somewhere here. Okay. So this is the first half washroom. Let's finish the left side first. Then once you move here, we have semi-open kitchen kind of a concept, where it is open to the dining area but not really open to the living side. So that's great. That is something that I really wanted. So let's see the kitchen first. So exactly grey and white जो concept है, we'll get the same concept which I liked. And here if you see all the appliances, so we are getting somewhat the same appliances, and that is the video that you'll see next, where we are going and buying the appliances. So yeah, let me show you the kitchen. इधर से आगे बढ़िए. Here we have good amount of storage. I would need more, but I have a plan for that also. So pantry here and here. Then the same appliances we are planning to buy, though our fridge is upgraded. That I'll show you in the next vlog. So here exactly our microwave would come over the range. This is the electric gas stove. I think good amount of space we have. Then I'll figure out what exactly, how do I want to style this, how do I want to decorate it, because I'm planning to have floating shelves here with flowers. But I will keep you guys updated of every change that I will be doing. Here we'll have our dishwasher, then storage spaces. This is island slash our washing area.
And then we again have a large window. Again, great for the sunlight, great for the view. Now let me show you the dining area. Also, we get all the fixtures which you see here. The one on the island, we'll get these three exact same, and the pot lights, we'll get this. I think this one is changed, that's what I know till now, but we still have to figure out. I'll let you know about that also. If we like it, great. If not, then we'll get it changed. So this is the dining area. Again, great window. Best बात है कि light घर में आती रहेगी, which is great, and air circulation के लिए भी बहुत perfect है. So once we are done with the dining area, we have a little space here. और यहाँ पर इन्होंने office kind of setup बिठा रखा है. But what I'm thinking is, I want a kitchen cabinet, a beautiful one. I have seen one in iFurniture as well as in IKEA. तो यहाँ पे मुझे एक सुंदर सी kitchen cabinet चाहिए, which will not be that large जो area occupy करे, and we would have great space in between too. Then once we move here, this would be our living room. And this is an accent wall that we don't get. Light fixtures, whatever you are looking at, that we'll get definitely. Obviously not the furniture and not the accent wall. But this is the area which is our living room. So planning to have like a TV cabinet here. And also I've got telling the theme that I'm planning on the middle floor would be like a farmhouse theme. Light, brown and off-white kind of a theme. I will share all the details. TV cabinet is already decided and shortlisted. We just have to order. So this is the middle floor. Now let's move on to the last floor and the top floor. Let's see. Yeah. Also the balcony to show you. So we have a little balcony here. Now this one you can see has a street view, but ours has a great garden view. That also I'll show you. But let me show you the balcony first. So again, lot of plans here. I would be getting the bulbs here to install to make it beautiful. Also, I'm not really sure, but yes, maybe for the ground I am planning to get like a we have wooden tiles or wooden tiles. I have that one also shortlisted. Here I'm planning to have like a sectional sitting area, very small, very compact, but very cozy and nice. And that is also shortlisted from IKEA. No table at all. And then here I think I would have like a very compact barbecue. And I think we should have enough space. जब फर्नीचर आएगा लगाना शुरू करेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा कितनी स्पेस है कितनी नहीं है कैसा खेला जा सकता है. But again, get back to me with all the ideas that you have of every corner that you see. Okay, let's move on to the top floor now. So once you go up, we have another window. नीचे भी थी, ऊपर भी है. Great lighting, like I'm saying all the time. Loving it, great view. Sunlight के लिए भी अच्छा है, light के लिए भी अच्छा है घर के लिए. ग्रेट. और जो हमारा फेसिंग है वो बहुत अमेजिंग है एज पर वास्तु. सो वो हमने ऐसे नहीं था कि हमको बहुत सारे ऑप्शंस थे और हमें चूज करना पड़ा. हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे और टेक्निकली हमने ये ऑटोमेटिकली चूज करा. नो हार्ड रूल. और वो ऑटोमेटिकली फॉलो हुआ सारे डायरेक्शंस और वास्तु उसमें. सो ग्रेट. आई शो यू दैट. आई एम एक्साइटेड टू शो यू माय हाउस. एग्जैक्ट सेम बट अनफिनिश्ड राइट नाउ. एंड हियर दे हैव अ मिरर. आई एम आल्सो प्लानिंग टू इंस्टॉल वन हियर बट लिटिल डिफरेंट. मे बी समथिंग एल्स आल्सो. यू कैन लेट मी नो. The lighting that you see here, the fixture, this is the one that we'll get. Exact same. हो सकता है different भी हो अगर ये available ना हो. But then we have this option of getting it changed, not from the builder. हम हमारी मर्जी से कर सकते हैं, which is great. I don't mind. So this is the last floor. चलो, the top floor. Come, I'll show you. Come, Ranveer, let's go. So the first door here on my right is the laundry area. So we have the washer and the dryer together. ये सारे appliances next video में तुम देखने वाले हमने जाके लिए हैं. Stack on वाला stackable है. तो this is our washing area. Now on my left we have 2 doors. Door 1 and 2. And this one is bedroom 1 and 2. Let's move on to bedroom 1 first. Come. So this is bedroom 1 again. Love the windows, big, great. And I would want to show you the view because we have the same view from our bedroom. हाँ, our view is much better. Like यहाँ पे घर दिख रहा है, वहाँ पे घर नहीं है, सिर्फ गार्डन एरिया है. So great like that. ये हमारा मल्टी फंक्शनल रूम होगा. क्या होगा क्या नहीं होगा मैं बताऊंगी. And then we have a closet here. The whole floor, this one is carpeted, and this is the closet. Let's move on to room number 2 now. So this is second room.
So this would be a guest room. Jumbo, huggy kar lo. So this would be the guest room. This is what the plan is. And again, somewhat same 19-20 का फर्क है दोनों जो फर्स्ट और सेकंड बेडरूम में, ज्यादा नहीं है. Same concept, everything is same. We have a closet here also. So after these two rooms, there is this third door, which is one full washroom. The first full washroom. Enter and we have bathing part here, which is a bathtub, not a standing shower. And then we have the whole thing. You can have a walk around. So technically what we have decided that this would be my washroom as per the use. This would be mine. You want me to take that one? You would take that one. Oh, wonderful. This would be mine because this is little bigger, I feel, and this would have all my skincare and all the things that I would want to do. I would do it here. Okay? Let's move on to the next one now. Next room. What is the next room? Let's see. So once you come here, we have two doors. For this one is our master bedroom, and this one is a linen closet. So I would show you this one first. So you open this, yeah, for all our linen, bed sheets, and everything. Another storage part. Now let's move on to the last room. So guys, this is the master bedroom. Again, love the windows, big, humongous, nice. In this master bedroom, there are two doors. So the first door that I would show you is this one, which is a mini walk-in closet. Whole of it would be mine. ये पूरा हम डिजाइन कर चुके हैं IKEA जाकर, like on computer, online कर चुके हैं. अब हमने बनाना है and I will take you along with that too. That stage जब हम बना रहे होंगे. But let me show you the closet. ये तनवीर को नहीं मिलने वाला है. तनवीर के लिए दूसरा क्लोजेट होगा. तो दिस इज द क्लोजेट. ये सब निकालने वाली हूँ मैं. रैक्स प्रॉपर बनने वाला है कुछ, वो मैं दिखाऊंगी. इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सक्सेसफुल चीज होने वाली है होपफुली. ऑल्सो मैं ये लाइट शायद चेंज करूँ, शायद नहीं, आई एम नॉट श्योर. आई थिंक ये लाइट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लोजेट के ऊपर लाइट्स लग जाएंगी तो ये लाइट एक एक्स्ट्रा रूम लाइट. करेक्ट. सो दिस इज द क्लोजेट एंड तभी मुझे सजेस्ट करा अंदर ही शीशा लगवा ले, एक मिरर अपने लिए. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. इनफ वॉल है यहाँ पे ना. नहीं, वहाँ पे मैं और अपना स्टोरेज बनाने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टफ है. तो मैं क्या सोच रही हूँ, बहुत सुंदर मैंने शीशा देखा है, वो मैं यहाँ पे लगाने नहीं वाली हूँ, रखने वाली हूँ बिकॉज इट इज ह्यूमंगस. सो इट विल बी जस्ट केप्ट हियर लाइक दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट डोर इन द लास्ट प्लेस, व्हिच इज द वॉशरूम इन द मास्टर बेडरूम. सो गाइस, दिस इज द वॉशरूम. ये मैं तनवीर को देने वाली हूँ. तनवीर यूज करेगा, ये तनवीर का होगा और मेरा सारा सामान वहां पड़ा होगा. अगेन जो फिक्सचर्स और सब कुछ, जो भी लाइट्स है वो हमको मिलने वाले हैं. हमें अपनी मर्जी से कुछ चेंज करना है, दैट्स अप टू अस. एंड वी आल्सो हैव अ विंडो हियर. कम ऑन, चल बच्चा बाहर. सो हमारे पास यहाँ पे भी विंडो है. बहुत ही मजेदार होने वाली है सिचुएशन, क्योंकि लाइट ही लाइट. वैसा और ऐसे घर में अंधेरा होना मुझे पसंद है, तो लाइट मजेदार. अब मैंने एक चीज और बतानी थी. हाँ, स्क्वायर फीट प्राइस और क्या क्या है. सो ये 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम है. स्क्वायर फीट है 1410 और 11 1411 स्क्वायर फीट, और इसका अमाउंट था $310,000. एंड सबसे अच्छी चीज, सेमी ओपन किचन है, फुल्ली ओपन नहीं है. तो अगर कोई भी क्वेश्चंस है, मैंने पीछे भी 2 एपिसोड्स शूट करे, एपिसोड 1, 2 एंड दिस इज द 3rd एपिसोड. आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी हाउस से रिलेटेड, सो दैट यू नो एंड यू वुड बी ऑन ट्रैक. ये लाइट का इफेक्ट दे रहे हो, मेरा बच्चा दे रहा हो मेरे को, ठीक है, सेलिब्रिटी इफेक्ट. तो वो दोनों एपिसोड्स देख लेना. ये 3rd एपिसोड है. कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो. वंस आई हैव गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, गुड बंच ऑफ क्वेश्चंस, आई डू अ Q&A वीडियो जिसमें मैं पूरे आंसर्स देने वाली हूँ. ओके, सो अब तुम जाके देख सकते हो हमारे घर के थोड़े से अनफिनिश्ड क्लिप्स. क्यों मैंने बोला घर अभी नहीं दिखाई, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग टच पे है. बट दैट इज द रीजन दैट आई डिडंट शो यू दैट वन एंड दिस. बट वो भी दिखाऊंगी मैं, फुल्ली empty house tour. Okay, oh yeah, that will be okay if you don't want to come in. Mamoru. Okay, चलो guys, this is the hallway. Pearl, तूने आना नहीं है किसी वीडियो में. This is our view. Room. Come here. Yes. If I can just get it instead of you and something else. So just not in the master? It will be double my work for you.
So guys, that's it. ये था हाउस टूर, ये थी इन्फॉर्मेशन. लेट मी नो आप लोगों को घर कैसा लगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा. ऑल्सो विद द प्राइस हमको एक्स्ट्रा खपना नहीं पड़ेगा. हमको इस अमाउंट में काफी अच्छी चीज मिल गई है. सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, जो कि थोड़े टाइम में नहीं होने वाली है. इनफैक्ट जब हमने साइनिंग करी थी इस पूरे घर की और पूरा वो डॉक्यूसाइन वाला सिस्टम हुआ था, उसके नेक्स्ट डे हमको कॉल आ गया था 40,000 बढ़ गई है इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट. तो अगर हम आज की डेट में बेचेंगे हमें $40,000 का फायदा है, जो कि अभी हम नहीं बेचने वाले हैं. सो दैट इज इट. भगवान ने हमारे साथ दिया और हमको बेस्ट चीज दी. ऑलराइट देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस डाउन बिलो. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके बाय. रणवीर से गुड बाय. बाय. डांसी 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 डांसी. लेट्स गो होम. चल चल जय करने चले. जय.